Good morning, students. Now, the same chapter, complex number, right? Now, previous class we discussed sum of two complex number, difference of two complex number, product of two complex numbers, division of two complex number, amplitude of complex number, modulus of complex number, conjugate of complex number. But today, our first thing is complex number. There are two topics. One is the additive inverse and second is multiplicative inverse. Now look here, student. This is the complex number z equals to a plus iota b. So now हमने पहले भी इस क्लास में डिस्कस किया है कि what is the complex number is the formation of the real part and imaginary part. A plus iota b. This is the complex form, right? Where a is the real part, b is the imaginary part. What is additive inverse? Additive inverse, and second thing, what is multiplicative inverse? Now look here, student, what is additive inverse and what is the multiplicative inverse? Additive inverse is denoted by z ka additive inverse, that means minus z. That means minus z is given a plus iota b. That means minus a minus iota b. This is the additive inverse. It's denoted by 90%. Or multiplicative inverse, that is z is a complex number. So what is the multiplicative inverse? Denoted by z inverse. And z inverse ka matlab that is a 1 upon z. And now z is a complex number, is given a plus iota b form. But now complex number in denominator, then rationalize. For example, is that now given is a complex number 3 plus 2 iota. Now find the additive inverse and multiplicative inverse. Additive inverse, that means now additive inverse, that means denoted by minus z, and minus z is a 3 plus 2 iota. So what is the additive inverse? Is 3 plus 2 iota minus 3 minus 2 iota. But what is the multiplicative inverse? Multiplicative inverse. Multiplicative inverse, that means z raised to power minus 1. That means 1 upon z. That means z is given 3 plus 2 iota. Right? But now complex number in denominator, then rationalize. Multiplied by 3 minus 2 iota, 3 minus 2. कोई भी complex number now is the form of a plus iota b form. Rationalize किया क्या होगा? 3 minus 2 iota as it is. This is the identity a plus b, a minus b. You know a plus b, a minus b. A square minus b square. What 3 minus 2 iota as it is? What is the square of 3? That is 9. What is the square of 2? 4. Iota square. And what is the value of iota square? Then iota square is always minus 1. This is the truth. Iota square is a minus 1, so minus minus plus 1, that is 4. 9 plus 4 is 13. So what is the complex form? Then 3 by 12 minus 2 by 12 iota. This is the multiplicative inverse. Right? Now in exercise 5.1, additive inverse and multiplicative inverse. और another same हमने आपको previous class में discuss किया था कि complex number 3 plus 2 आयोटा है. तो what is the conjugate? You know student, conjugate that means is a z bar, then 3 plus 2 iota. उसका bar that means is the only sign change of imaginary part. Plus है तो that is the minus. यानी कि 3 plus 2 iota का conjugate क्या होगा? 3 minus 2 iota. Suppose अपने पास complex number है minus 3 minus 2 iota. तो what is the conjugate? Minus 3 plus 2 iota. Only sign change of the imaginary part. So this is the conjugate of complex number. Now look here student, previous class में हमने discuss किया था modulus and argument. I think आपको समझ में आया होगा. फिर भी एक क्वेश्चन और कि suppose अगर complex number division form में given है. This question
now is given in miscellaneous exercise on this chapter. So complex number है division form, right? For example, now complex number is 1 plus iota upon 1 minus iota. This is the formula. 1 plus 3 iota upon 1 minus 2 iota. 1 plus 3 iota upon 1 minus 2 iota. This is the complex number. First thing, कोई भी complex number अगर division form में है, first thing now form of a plus iota b. a plus iota b को form में convert करने के लिए now rationalize. So 1 plus 3 iota upon 1 minus 2 iota. Now multiplied by 1 plus 2 iota upon 1 plus 2 iota. Simple. दो फैक्टर को अपन मल्टीप्लाई करते हैं. Then 1 into 1 1. 1 into 2 iota से multiply, that is 2 iota. 3 iota multiplied by 1, that is 3 iota. And 3 iota into 2 iota. 3 2s are 6. Iota into iota, iota square. And denominator a minus b, a plus b. This is the identity of a square minus b square. Now look here. What is the value of iota square? Is minus 1. So that is a minus 6. Minus 6 plus 1, that is a minus 5, is the real part. And 2 iota plus 3 iota, that is 5 iota. Upon, what is the square of 1? 1. What is the square of 2? 4. And what is this value of iota square? That is a minus 1. So minus minus plus 1. 6 is the iota square is minus 1. And now is the minus 5. Then 5 is common, left minus 1 plus iota upon 4 plus 1 5, 5 so 5 cancel. So this is the complex number is minus 1 plus iota. This is the a plus iota b form. And what is the real part and what is the imaginary part? कोई भी complex number अगर a plus iota b form में है, where a is the real part and b is the imaginary part. So what is the real part a? That is the real part a is the minus 1. And what is the imaginary part b? That is the imaginary part b is plus 1. This is a coefficient of iota. This is the imaginary part. And real part without iota. A plus iota b form में आपके पास complex number z equals to minus 1 plus iota है. So that is the minus 1 is the real part. Real part denoted by small a. And imaginary part is a coefficient of iota. That means 1. Iota coefficient. So a is a minus 1, b is a 1. अब हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था फाइंड द मॉडुलस ऑफ z. क्या होता है मॉडुलस ऑफ z? इस क्वेश्चन में मुझे मॉडुलस ऑफ z फाइंड करना है. मॉडुलस ऑफ z मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था डिनोटेड बाय कौन से? फॉर्मूला था अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. व्हाट इज a? व्हाट इज b? a is a minus 1, स्क्वायर is a square, b is a plus 1. What is the square of minus 1? Plus 1. What is the square of 1? 1. 1 plus 1, 2. This is the root 2. This is my first answer. This is the modulus of z. Correct? Second thing, now find amplitude. Amplitude के लिए मैंने आपको डिस्कस किया था. First thing find करो tan alpha. Right? Amplitude जिसको हम आर्गुमेंट भी कहते हैं. लेकिन amplitude find करने के लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया और उस फॉर्मूला है tan alpha equals to mod of b upon a. सबसे पहले आपको अल्फा फाइंड करना है. अब क्या करेंगे? tan alpha as it is b, what is the value of b? b is a 1, a is a minus 1. 1 upon 1 1 होता है, but minus है. और mod में नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाती है? पॉजिटिव. So what is the tan alpha? Tan alpha equals to 1. अब आप tan की टेबल में देखिए 1 वैल्यू किसकी होती है? tan की टेबल में 1 वैल्यू that is a tan 45, जिसको अपन रेडियन में क्या बोलते हैं? tan pi by 4. tan to tan cancel. What is alpha? pi by 4. This is not amplitude. Amplitude या argument is denoted by theta. हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि देयर आर 4 क्वाड्रेंट, राइट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल्स टू अल्फा. सेकंड क्वाड्रेंट में फार्मूला बताया था, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल्स टू माइनस अल्फा, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा और इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव पाई माइनस अल्फा. ये चार फार्मूले याद रखने हैं आपको. थीटा से डिनोट होता है एम्पलीट्यूड, बट इट डिपेंड ऑन दिस फार्मूला कि जिस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको मालूम है x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं. सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव. थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ आर नेगेटिव. फोर्थ क्वाड्रेंट में
पॉजिटिव, नेगेटिव, राइट स्टूडेंट। सो फर्स्ट थिंग, अगर आपको एम्पलीट्यूड फाइंड करना है तो सबसे पहले आप लिखोगे पॉइंट P, आपके पास रियल पार्ट -1 है, राइट, इमेजिनरी पार्ट 1 है। ये पॉइंट P किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है? रियल पार्ट नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, सो व्हिच क्वाड्रेंट? द क्वाड्रेंट सेकंड, राइट। सो आप लिखेंगे पॉइंट P लाइज ऑन सेकंड क्वाड्रेंट। जब सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है तो हमने फार्मूला क्या लिखा हुआ है? थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा। पाई एज इट इज, अल्फा, व्हाट इज अल्फा? पाई बाय 4। पाई माइनस पाई बाय 4 कितना होता है? 3 पाई बाय 4। This is amplitude of Z, या इसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, ये आज, राइट। और डिनोट किससे करते हैं? थीटा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल्स टू 3 बाय 4। ये आपका एम्पलीट्यूड है और ये आपका मॉडुलस है। आपको लास्ट में क्वेश्चन पूछेगा मॉडुलस फाइंड करने के बाद, एम्पलीट्यूड फाइंड करने के बाद, नाउ राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। Student, this is form is the Cartesian form. A plus iota B form is the Cartesian form of complex number. आपको polar form फाइंड करनी है तो now write polar form Z equals to r cos theta plus iota r sin theta. This is the polar form of complex number. What is r? What is theta? Theta is 3 by 2. And what is r? R is the modulus of Z. Modulus of Z को r से डिनोट करते हैं। सो r की वैल्यू मेरे पास √2 है, r यहां पे रखूंगा, यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, √2 इज कॉमन एंड cos थीटा, व्हाट इज थीटा? 3 बाय 4। यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर पोलर फॉर्म में फाइंड करना है तो आपको अबाउट टू थिंग्स, दो चीजें फाइंड करनी होगी, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। r और थीटा की वैल्यू आप याद रखोगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया पोलर फॉर्म में, क्यों सब्स्टिट्यूट करना है r एंड थीटा। सो स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट थिंग, कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन फॉर्म में था, a प्लस iota b फॉर्म में लेके आए। सेकंड थिंग, हमने मॉडुलस फाइंड किया। थर्ड थिंग, एम्पलीट्यूड फाइंड किया। एंड नाउ r and theta substitute in this, this is the complex number in polar form, right? Any problem student, right? First thing, ये हमारे पास में एक्सरसाइज 5.2। 5.1 is the basic, sum of two complex number, difference of two complex number, product of two complex number, division of two complex. This is very important topic, exercise 5.2. So please solve exercise 5.2 and miscellaneous exercise. Thank you.